again looms over the national capital and an orange alert has been issued as Yamuna is flowing above the danger level mark. Now at 8 a.m. on Sunday, which is today, water level at Old Yamuna Bridge has been recorded as 205.9 meters. As per the CWC forecast, level will cross 206.7 mark by 4 p.m. of the day. So this is the recent piece of breaking news that we are receiving about that flood-like situation that has again emerged for the national capital. I have CNN News 18's Yash Goyal joining me live from Ghaziabad. Yash, a very good morning to you. I'm hoping that you are safe. Could you give us more details about the situation around you? Well, Sakshi, this is right now Ghaziabad, and in fact this in particular is Ator Nangla village, which is completely inundated in water, and in fact this is the Hindon river's water which has come inside this particular village. You can see how people have been evacuated from this very space. Still there are certain people who are staying in their homes because they're refusing to actually exit their home. They say that we will live on the first floor but we're not going to leave our homes, and in fact you can see now this entire village is completely deserted, and in fact there is a school also over here which is also completely submerged under the water. Though talking about the water levels, as you rightly mentioned, that yes, Yamuna once again has breached the danger mark here in Uttar Pradesh, and in particular in Ghaziabad the water level still remains under the danger mark. In Hindon river specifically, the danger mark is somewhere around 205.8 meters, and right now the water levels are somewhere around 199 to 200 meters. So the water levels are still way below the danger mark, but the worrisome situation is that these are the low-lying areas near river Hindon which are witnessing heavy water logging and flooding over here. In fact, all those houses you can see, these lies under Ator Nangla area, and in fact all these houses have been completely inundated in water, and in fact the locals here have told me that at that very spot the water is somewhere around 7 to 8 feet, and in fact I have some locals also with me over here who are actually talking about the situation with me as to what exactly transpired in this entire situation. भाई साहब पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम सर नरेंद्र जी, कब से पानी भरा है यहाँ पे और क्या हालात रहे हैं इसके? ये सर पिछले 5 दिन से पानी भरा हुआ है बहुत ज्यादा। तो इधर जो आप पीछे मकान देख रहे हो ना, ये सब एक पूरा आदमी गरीब आदमी बेचारे ये सब खाली कर दिए हैं। ऐसा प्रशासन भी आया था, एनडीआरएफ भी बुलाने पड़ी, जब बहुत ज्यादा पानी हो गया, पानी अभी भी बढ़ा हुआ है। तो एनडीआरएफ ने जो बचाव का अभियान किया था वो पूरा इसी एरिया में किया कर देता है। ये पूरा खाली है, एक आधे इक्का दुक्का जैसे ये है या कहीं कहीं आपको देख रहे हैं, ये सब खाली करें। बाजी कुछ जैसे ये मकान नहीं छोड़ रहे हैं अपने, अगर हम यहीं रहेंगे तो कुछ है, बाकी सब खाली करा लिया। तो पिछले 5 दिन से पानी बढ़ रहा है, घट रहा है या वैसे ही है? बढ़ रहा है, पानी का भाव इधर से कम होगा। इधर आप इधर देखोगे ना तो उधर ज्यादा हो गया पानी का भाव, इधर कम है लेकिन बढ़ रहा बहुत ज्यादा है पानी। तकरीबन कितने लोग रहते हैं इस गाँव में? कितने लोग तकरीबन, कितने घर है टोटल? 500 से 1000 के बीच में घर है। काफी पॉपुलेशन इधर बहुत ज्यादा है और ज्यादातर इलाकों से निकाल लिया लोगों को बाहर? सबको निकाल लिया। अब ये खाली मकान है, कोई इक्का दुक्का कोई धारा होगा वैसे है नहीं। जब ये वापस फिर गई यहाँ से करके। वेल, आई हैव ऑल्सो जेंटलमैन ओवर हियर। एक बात बताइए, आपने पहले आखिरी बार ऐसी स्थिति कब देखी थी इस गांव के अंदर? आखिरी बार कब इतना पानी भरा था? सन 78 में। So you can see, Sakshi, how the locals are saying that last when they saw this entire situation was way back, approximately 3 to 4 decades back, and you can only just imagine the plight of people over here. First we witnessed flooding in national capital, now same sort of situation is happening here in Ghaziabad and in particular in Noida. Yes, it's a tributary of river Ganga, and then eventually it meets in river Yamuna. So this is the very situation, and in fact this is how people are also struggling to commute from one place to another. And in fact the authorities, what they have said is that NDRF team have evacuated around 1,000 people in these low-lying areas, and in fact from this particular area around 100 people were rescued. In fact that rescue operation was launched yesterday night when certain people complained of in fact being stuck on that very part of that very road. So right now situation remains grim on the ground, though the authorities have maintained that these levels could in fact rise further, and the DMs of the areas and in fact the police forces, everyone has been kept on alert. When we in the early morning, sources within the NDRF has also told CNN News 18 that operations were on from the last 4 to 5 days, but today the situation is worse. And in fact the gentleman whom we spoke, he also maintained that the situation kept on worsening over here. In fact this is the 5th or the 6th day. Okay, yes, I'll have to interrupt you over there because we have an exclusive report by you. Let's listen in.
There are a lot of local life which has also been affected and in fact आप बता पाएंगे कि क्या हालात बने कुछ दिनों में यहाँ पे और किस तरीके से लोगों की जिंदगी पे प्रभाव पड़ा है? ये हालात तो अभी बने जी, पहले तो कुछ भी नहीं था। पूरा करेड़ा के गांव देख रहे हो तो पूरा गांव खाली करवा देगा नीचे से। कल में खाली करवाया है। तो तकरीबन कितने लोगों को निकाला होगा वहाँ से? देख रहे हो बिजली घर, इसके पल्ली साइड से जाओगे करेड़े की तरफ कोई नंबर नहीं है भाई। अभी वहाँ से आए, वहीं से आए अभी भाईजान। तो आप बता रहे थे यहाँ पे लोग खेती बाड़ी भी करते थे, सब चीजें करते थे। पेड़ है इसके पल्ली साइड में, खेत है पूरे। अच्छा, खेत है पूरे। तो मतलब पहले पानी इस जो आप पेड़ बता रहे हैं उसके उस तरफ रहता था और अब इधर तक आ गया है? अब पानी पहले इधर रहता था, अब पानी उधर पहुंच गया है सारा खेतों में। ये हिंडन नदी के जो किनारे के कुछ क्षेत्र है, स्पेशली छीजा रसी है, बिसरक थाना क्षेत्र के चोटपुर है और कुछ बिसरक थाना क्षेत्र में भी कुछ ऐसे एरियाज है। सेक्टर 63 थाना के अंतर्गत कुछ एरियाज है, इकोटेक 3 में भी कुछ एरियाज है। तो इस तरह से ये जो हिंडन नदी के किनारे के जो एरियाज़ है उन एरियाज़ में कुछ जो लोअर लाइंग एरियाज़ है उसमें बस्तियों में कुछ पानी घुस आया है। कुछ जगहों से घरों से लोगों को खाली कराया गया है। अभी तक कोई ऐसे डेंजरस लेवल तक पानी किसी भी बस्ती में नहीं पहुंचा है, पर एज ए प्रिकॉशन कुछ लोगों को ऑलरेडी हायर साइड पे शिफ्ट किया गया है। इनको आपस में जो नियर बाय बारात घर है, स्कूल है, उन पे यहाँ पे वहाँ रखा गया है। खाने पीने की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की जा रही है। Well, that's all from me for now. But more news and updates continue on CNN News 18. Stay tuned with us.